students, so now we are going to start a mock interview for our student Rahul Malhotra, and this mock interview for Oil India Limited. So Rahul, first of all, you tell us your B.Tech branch and how did you get this interview call for OIL? So my B.Tech specialization is Electronics and Communication Engineering, and I wrote a Oil India exam in September. So I qualified that and then I got a call for personal interview. Okay. Okay, so Rahul, now you introduce yourself. Yes, sir. My full name is Rahul Malhotra. I was born and brought up in Delhi. I did my schooling and my graduation from Delhi itself, from the Guru Gobind Singh Indraprasth University. And then I got selected in Bangalore for an apprentice post in ONGC, Bangalore Refinery Petrochemicals Limited. I worked there for 7.5 months. After that, I got a research fellowship in DRDO in Bangalore. So since last 3.5 years, I am working on the post of Senior Research Fellow in DRDO. Apart from that, in my family, my mother and father is there, and my elder brother. My father is an electrician and my mother manages home. And in my dynamic qualities, I am doing my M.Tech from embedded systems from BPCL. It's an online course, so I am doing with my job. And then I have 2 research publications. And in my leisure time, I prefer to play badminton and do mandala drawings. And I focus mostly on to improve my value system, such as being more honest and to maintain my integrity in the workplace and in my personal life. Okay. So why did you join this apprentice at ONGC? Sir, after college, I was actively looking for the opportunities to work. And I appeared for the exam for graduate apprentice training. And because it was an industrial experience exposure, so I opted it. Actually, I got a TCS interview also from college placement. I got the job in TCS as an application engineer, but I preferred ONGC over that. Okay. And then after completing this apprentice, you joined this DRDO as SRF. On a post of JRF, after 2 years, I got promoted as an SRF. Okay. So do SRF also go for PhD there? Sir, actually, there is a provision that we can go for PhD also, but though I was from the only graduation background, so I enrolled for post-graduation first. Okay. So in BPCL, there, how are the placements there? Sir, for work integrated learning programs, we are not eligible for placements because they think that our organization is promoting us to have a higher education so that we will be beneficial to the organization we are working in. It's especially for working professionals. Okay, so means you did not join this for placements, but for higher education, right? Yes, sir. So why not to complete M.Tech and then go for PhD? Sir, I always wanted to work in a government organization. So if I get the opportunity today, I don't want to miss it. Then why this M.Tech? Sir, M.Tech is my side by side. It is going in. It's in parallel to my work. So you have apprentice in ONGC and now in Oil India. Are you aware about the works you are going to do there? Yes, sir. Mostly I know that it will be related to instrumentation. So how is this embedded helpful there? Sir, embedded says mostly the system design as a package. Embedded systems look a project as a full package. Like it will be having hardware, it will be having software. Totally, we see it as a embedded system. So as in refinery also,
we have overall system, but on a larger scale. So, but embedded system will help me to see the system whole as a system. It's like hardware and software. I have a specialization in both the domains. Okay. I don't have any idea about embedded. Okay. How will you make me expert in embedded? By saying 3 or 4 sentences about that. Means I can have some idea about that, clear idea. Okay, sir. If for any specific application, we want that a hardware should do some specific task. For that, we have to program also according to our need. So putting different hardwares which are useful for our application and putting a software and bring it out as a very low profile module is mostly an embedded system engineer do, like our smartphone. Now tell me one thing. You are from ECE background. Yes, sir. Okay. But now you have moved earlier also, and now again you are trying to move towards instrumentation works. Yes, sir. So what is the reason behind that? Sir, instrumentation, I see my profile as an electronics and communication engineer. I never see only the one aspect that it will be instrumentation or it will be embedded systems. So if I get the opportunity to work in my field, I welcome it. Okay. Now tell me your long-term career objective. Long-term career objectives, I see myself as in a government organization. I want to work, and through the electronics and communication side perspective, I want to be a part of policymaker so that we can bring out the best for the industries. Okay. Tell me about your weakness. Sir, sometimes I take tasks very seriously, and so I just somewhere lose my work-life balance. So that I consider as one of my most weakness. So it happens daily, or how many times in a month? It mostly depends on the criticality of the task. So on an average, how many times? Once in a month, sir, almost. Once in a month, if it occurs, then how can you say it negative? Sir, once in a month, I get a trigger that something I have in me to improve on. So that's it's negative. Okay. Now tell me, what is a transducer? Transducer is a device which converts one form of energy into another. Then what is inverse transducer? I want to correct myself, sir. Transducer is a device which converts any form of energy into electrical energy. And inverse transducer is to convert the electrical energy to other form of energy. Is there any other name also for transducer? Sensors. Any other? I cannot recall right now, sir. Okay. So how many transducers you have seen during your apprentice? Can you tell us the names of some of them? Yes, sir. Mostly the process was divided and being monitored in the 4 basic parameters, and they were pressure, temperature, flow, and level.
So for each parameter, there were transducers or sensors, we can say, which were checking the process parameter and converting it into the electrical signal, which was coming to server room. Okay. So which one of them is process variable? Sorry, sir? You told me about temperature, pressure, these things. Which one is process variable? All are process variables, sir. Okay. Tell us about some temperature sensors. Sir, it's thermocouple, RTDs, pyrometers. I can recall 3. So where do we use pyrometers? Sir, when we don't want a direct contact, what we used to do in refinery, I was in a power plant there. So boilers were there. So by just from a distance, we were having that pyro gun. So we used to just like a shooting to the material, and from there we got the temperature on the screen. So no direct contact. So that was the major pyrometer. Okay. Okay, Kailash sir, you can continue. Hello. Yes, sir. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. Okay, tell me, you got call for oil, right? Yes, sir. But currently you are pursuing your M.Tech, then what is the purpose of pursuing M.Tech? I didn't get this point. Sir, we were having, according to like one past year, I saw myself as like I was having spare time after my lab. So that's why I enrolled for M.Tech program. That was okay. Can you tell me what? Can you tell me any of the control mechanism which is used in the oil industry? PID control, sir? No, I'm not asking controller, right? Okay. I'm asking any practical control system. Practical control system. So specifically, I'm not getting actually what. Okay, now tell me. You're doing embedded, right? Yes, sir. Have you mentioned this in your profile which you have submitted with this PSU? Yes, sir. I have written there. Okay, tell me how this embedded will be useful if we are, making some control apparatus or control mechanism for oil industry. Any idea? Sir, I have seen the cards there, what were used for transmitters or on the satellite room. The cards, input-output cards were there. So that you can see it as an embedded system product. Okay. So if I have a deep down knowledge of embedded systems, it will be really helpful to go for the right choice of the cards from the vendors. And sir, I see my research experience and my embedded system experience as a homework. So it's like a Gurukul for me, sir, right now. And if I get a industry, I see it as my Karam Bhumi. So if I get the opportunity, it will be the real place where I can be able to put my knowledge. Okay, I ask a simple question. What is the difference between embedded and microelectronics? Sir, microelectronics works on the sensor parts, MEMS, as you have heard. No, I'm not asking about microelectronics and that MEMS. That MEMS is something different, right? We are talking about microelectronics and mechanical sensor, right? Yes, sir. I'm asking simply about microelectronics and VLSI and embedded. Tell me, VLSI and embedded are the same thing or different thing? No, sir, it's different, completely different. How it's different? Microelectronic VLSI, as you have mentioned, is mostly focuses on to make one integrated circuit within a smallest possible package.
That is the final aim of microelectronics engineer or with us engineers. And using that package for the application which user demands. To integrate all such ICs into a system and program it according to users' demands, and then give it as a product to them is the role of embedded system engineer. Okay, now tell me, suppose nowadays we talk about digital, right? Digital we talk about a lot, right? Digital world, digital things, digital transfer, everything, you know, whatever activities we are associated in surrounding, we talk about digital, right? Yes, sir. So tell me, in any oil industry, you know, if obviously in oil, the biggest problem is the control mechanism, right? So do you have any idea about digital control techniques? Sir, in my experience during apprenticeship, I have seen the PLC systems which were totally based on the digital logics, and DCS systems which were mostly based on the analog or continuous operations, controlling things. So control systems and PLCs were totally on the trip logics or startup sequencing. So it's mostly on the digital logics, based on the digital logics. So I can see that. Tell me, suppose if we have some information in oil system, right? So what are the different techniques we can use for the encryptions? How we can encode that so that other can't get informations? Sir, regarding encryption, I have to look into that. So I have never looked at the topic of encryption. Okay. So you are comfortable in which subject specifically? Control systems, digital electronics, electronic devices, analog circuits. Okay. Suppose you need to tell me any one device. Okay, any one device you need to tell me which will help me converting analog to digital. Any one device. I don't want to know the process. Simply tell me any particular device. Okay, sir, this is the device which can solve the purpose. You got my question or not, right? Yes, sir. Any one device, analog to digital converter, sir? Yeah. That can solve your purpose, sir. Analog to digital converter. That can be? Sorry, your voice was not audible, sir. Now audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. That can be? Sir, analog to digital converter, I said. No, वो तो ठीक है, प्रोसेस है. कोई एक एलिमेंट या डिवाइस जो अकेला इस काम को कर सकता है सॉल्व, है कोई ऐसा डिवाइस? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं सर. कैसे? ओपन लूप में कर सकते हैं सर. आप एक रेफरेंस पिन पे, मतलब इधर पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम एक रेफरेंस वोल्टेज रख दें और फिर आप दूसरे इनपुट पर पल्स दे सकते हैं, एनालॉग सिग्नल दे सकते हैं और जो आउटपुट होगा. राइट, आई गॉट इट. तो इन चीजों को ना गैस करने की कोशिश करो, राइट? अगर आपको पता है कि आप बता सकते हो, देन आस्क देम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सर गिव मी सम टाइम, आई एम ट्राइंग. ठीक है, गैस मत करो रैंडमली लाइक मॉसफेट. ये जब आपको पता है तो मॉसफेट पे क्यों घुस रहे हो? एक चीज याद रखना, मॉसफेट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ज्यादा स्विचिंग के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे ऑयल इंडस्ट्री में. और ऑयल इंडस्ट्री में मॉसफेट का कहीं यूज होगा ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है, मॉसफेट को तो डिस्कशन में लाना ही नहीं अंटिल हो. ज्यादातर वहां पे क्वेश्चन अगर बनेंगे आपके बैकग्राउंड से तो ऑप एम्प के ऊपर ही बनेंगे, राइट? आपने एक टर्म सुनी होगी, लोडिंग इफेक्ट. सुनी आपने लोडिंग इफेक्ट? हाँ जी सर. व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट? एक्सप्लेन इन डिटेल. सर, एक हमारा पावर सोर्स है. If we consider one system as a power source and another system as a load. So what we see is if the resistance, overall input resistance becomes very low of the subsequent system, then there is what will happen, it will draw the large current and drops the power. So voltage source, the voltage of the power source. Okay.
So how we can avoid this loading effect? Sir, usually we should provide a buffers in between the two systems. Okay, tell me again any practical example which can be used as a buffer. You Sir, told me, right, that we can use the buffer, right? That is right. Can you tell me some example? Okay, sir. Yes, sir, like two resistors in parallel in series, if we put, and one resistor is acting as a thermistor. So any other solution, any other alternate, any active device you can use. Buffers, sir. Mm-hmm. In instrumentation amplifier, we use buffers. Can't we use unity gain operational amplifier negative feedback? That is itself can act as a buffer, sir. Can't we use common collector configuration of transistor? Common collector configuration of transistors. That is also a unity gain, but I'm not sure whether it can serve the purpose of buffer. Buffer की क्या characteristics होनी चाहिए बताओ? What should be the characteristics of buffer? Sir, unity gain, high input impedance, and low output impedance. तो बताइए common collector का input impedance क्या होता है? High होता है कि low होता है? Common collector serves as a voltage source. So sir, exactly same होता है. High input होता है और low output impedance होता है. फिर use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं. Okay, fine, no issue. आपके पास suppose एक circuit है. Let us say simply talk करते एक circuit में. Am I audible? हाँ, yes sir. आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्स है, राइट? Okay. All right. So you are not audible now. We have a circuit which is having two frequency sources. After that, your voice got break. Hello. Rahul, am I audible? Hello, am I audible? Now you are audible, sir. हाँ, मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास एक सर्किट है, उसमें दो सोर्स है और दोनों के फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, राइट? ओके. तो मुझे उस सर्किट को सॉल्व करना है, तो कौन सा टेक्निक बेस्ट होगा उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने का मतलब है आई वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट सर्किट, राइट? दैट कैन बी कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, दैट कैन बी कैलकुलेशन ऑफ करंट, पावर इन एनी ब्रांच, राइट? तो बताओ कौन सा टेक्निक प्रेफर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म. मुझे ये बताओ, उसमें हम नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैश एनालिसिस यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताओ. कर सकते हैं सर. तो आपको लगता है वो अलग अलग सोर्सेज को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज को आप एक साथ यूज कर सकते हो? दोनों का पीक वैल्यू अलग अलग टाइम पे नहीं आएगा? हाँ सर, वन सोर्स एट अ टाइम यू हैव टू यूज. तो नोडल में आप वन सोर्स एट अ टाइम थोड़ा लेते हैं. नोडल में आप वन सोर्स एट अ टाइम लेते हो क्या? नहीं सर, मल्टीपल ले सकते हैं. देखो राहुल, ऐसा है कि व्हाट आई बिलीव, आपको वहां पे जो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड, जो आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, राइट? हो सकता है कि वो आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछे, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, और उनके शायद एग्जैक्टली कोई आंसर ना भी हो, एग्जैक्ट आंसर. वो जस्ट आपको असेस करने के लिए कि आप कितना डिस्कस कर पा रहे हो और आप कितना उनको सोल्यूशन दे पा रहे हो उस चीज का, राइट? वो शायद जानने के लिए आपको पूछे हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक के लिए. तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आएगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मुझे इसका फाइनल आंसर बताना है, ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, यू कैन एक्सप्लेन. समझे बात को? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम ऐसे इंडस्ट्री में जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कोर नॉलेज से रिलेटेबल नहीं होती है, फाइन, तो वहां पे वो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पूछते हैं, और जब भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आता है ना, दैट इज नॉट क्वेश्चन आंसर, ओके? दैट इज अ डिस्कशन. यू गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन आंसर होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का. जी हाँ जी, ये बताओ ये क्या, इसका आंसर क्या होगा. मैं आपको बोल दूं कि जी एक आपको ऑयल के लिए एक चैनल बनाना है जिसमें आपके पास जो है फिल्टर्ड अलग चला जाए, अनफिल्टर्ड अलग चला जाए, तो उसका आंसर नहीं होता है, उसकी डिस्कशन होती है.
वी कैन यूज दिस, वी कैन यूज दिस, राइट। तो अपने माइंड को स्टेबल रखना है एंड व्हाट दे आर आस्किंग उसको ध्यान से सुनना है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रेजेंटली सोचना है। इस तरह की कंपनी में यहाँ पे ये सोच के नहीं जाना है कि हाँ मैं तो ये पढ़ के आया था, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, राइट, बिकॉज ये आपके कोर्स से रिलेटेबल बहुत कम है। फाइन। तो यहाँ पे जो वो आपको इंस्टाटेनियसली लाइक एक लाइव प्रॉब्लम देंगे, अपने माइंड में लेके चलना है। तो मैं कर दूंगा, मैंने पढ़ रखा है, बट कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चंस। आजकल आप वो देखते हैं, शार्क टैंक एक सीरीज चल रही है, राइट, अगर देखा होगा आपने, राइट, देखा है आपने? नहीं सर। उसमें उसको देखना कभी और प्लीज रिकमेंड करूंगा उसको देखो। उसमें जो भी बंदा अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आता है, बिजनेसमैन खासकर, वो अपना पूरा तैयारी करके आते हैं, दैट इज काइंड ऑफ इंटरव्यू होती है, राइट। बट वहां पे रियली वो क्वेश्चन बनाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो आपकी प्रोफाइल को रिलेटेड होंगे, वो आपको सर ने पहले बताए भी, जो नॉन टेक में पूछे गए हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली आप एक्सपेक्ट करोगे एनालॉग में ऑप एम्प के ऊपर, या सैम्पलिंग के ऊपर, या ए टू डी कन्वर्टर के ऊपर, या थोड़ा बहुत स्पीड के ऊपर, राइट। बाकी जितने भी होंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका होता है लिसन देम केयरफुली, और उसी में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो इंस्टेंटेनियसली। माइंड में ये पहले से प्रोग्राम होके जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछेंगे, राइट। ओके। तो बाकी त्यागी सर आपको रिव्यू देंगे। त्यागी सर, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके राहुल। यस सर। देखो यार, एक तो आपको ना स्ट्रेस नहीं रहना बिल्कुल भी। अभी आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो चेहरे पे। हाँ जी सर। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा मतलब टेंशन वाला इशू नहीं मानना इसको। हाँ जी। वहां पे बिल्कुल भी नर्वस और टेंस नहीं दिखना, कूल दिखना है, बिल्कुल आराम के साथ कंफर्टेबल हो तुम। मतलब अगर ये काम कर लिया तो समझ लो कि 20% तो आप सक्सेसफुल हो गए इंटरव्यू में। ओके। और दूसरा, अगर कुछ आंसर करना चाह रहे हो या तुम्हें पता है कि भाई मुझे इसका आंसर करना है, तो उसको क्लियरिटी के साथ बताओ। गुलमुल सा जो होता है ना, जिसको घोलमोल बोलते हैं, कई जगह ऐसा लग रहा है मतलब कि जो कहना चाह रहे हो उसको साफ साफ एक्सप्लेन करो। भाई आपसे पूछा कि एमटेक यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया, जैसे ये एम्बेडेड में आपने एमटेक ज्वाइन किया, तो इस एमटेक को ज्वाइन करने का रीजन आप क्लियरिटी के साथ बता नहीं पा रहे हो, मतलब सही करके। आप सिंपल बोल दो ना, जो चीज रियलिटी है वही बोलो कि सर सबसे पहले कॉलेज कैंपस से निकला तो मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं टीसीएस ज्वाइन करूं या ये अप्रेंटिस करूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने सोचा कि कोर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैंने ये अप्रेंटिस ज्वाइन करना ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि फ्यूचर में मैं किसी पीएसयू के साथ एसोसिएट हूं, कोई पीएसयू में जॉब करूं, ये मेरा पहले एम था। तो मुझे अपॉर्चुनिटी ये बेटर लगी, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, काफी चीजें लर्न की और इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो ये एसआरएफ था, क्या ये रिलेटेड वर्क है कि डिफरेंट है? ये क्यों ज्वाइन किया था तुमने? सर ये उसके और बाद ज्यादा कोर है। क्या कोर है ना? हाँ, तो बता सकते हो कि सर फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी, पीएसयू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ट्राई कर रहा था, तो साथ में मैं कुछ ना कुछ लर्निंग में मोड में रहना चाहता था कि मैं टेक्निकल चीजें लर्न करता रहूं, मतलब साथ में। तो मैंने फिर एसआरएफ का वो ज्वाइन कर लिया। वहां पे तुम्हें कुछ पेमेंट भी मिलता होगा, स्टाइपेंड वगैरह कुछ। हाँ, कि सर उससे क्या होगा कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और मैंने काफी चीजें लर्न की, और अपना जो मेन अल्टीमेट गोल था उसकी तरफ मैं कंटिन्यूसली प्रिपेयर करता रहा। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एसआरएफ में पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पीएचडी भी करते हैं। ठीक है, मेरा हाउएवर कि पीएचडी में मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि मैं पीएचडी में ज्यादा लंबे टाइम तक रहूं, मैं पीएसयू में ही इंटरेस्टेड था। बट एज ए बैकअप मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बीटेक बेसिस पे आप फिर आगे अगर पीएसयू एक इनकेस नहीं मिलता, ठीक है, और आप फिर हायर उसमें रहना चाहते हो, तो वहां पे फिर डिग्री भी मैटर करती है। तो मैंने सोचा कि एमटेक साथ में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सिंपल। सर एक्चुअली रीजन तो था कि वो कंपल्शन था, आपको अगर 2 साल के बाद भी फेलोशिप एक्सटेंड करानी है तो आपको हायर एजुकेशन में एनरोल होना है। तो ये बोल दो वहां पे चीज की, वहां पे ऐसा कुछ रूल भी था, ये बता दो उनको, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कंपल्सन बोल दो कि सर इसमें पार्ट ऑफ दिस था मेरे प्रोग्राम का ये। ठीक है,
और एम्बेडेड इसलिए ज्वाइन किया कि वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट्स की, वो इसमें एम्बेडेड में काफी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुम्हें प्लेसमेंट तो मिलना नहीं था, तो एम्बेडेड क्यों लिया तुमने, ये बताइए। सर क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था, मतलब प्रोफाइल डीआरडीओ में जो मेरा प्रोफाइल है वो एम्बेडेड है, तो मुझे परमिशन एम्बेडेड सिस्टम्स में ही करने की मिली, क्योंकि वही मैं काम करता हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैं जॉब मतलब तो ये स्पेशलाइजेशन जो ले आप सकता मुझे बता रहे हो उसी टाइम पे बोलना है ना आपको। हूँ। ओके। ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए ना हमें, जो आप पता चल रही है वो क्लियरिटी इंटरव्यू के टाइम पे उनको हो जानी चाहिए ना, अलग से थोड़ी बताओगे उनको फिर। हाँ जी। सारी चीजें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताओ कि जी ये सर। रीजन था, सिंपल सर, कंपल्सन था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कि वहां पे रूल था ये सर कि मैं, और यही ऑप्शन था वहां पे एम्बेडेड का, तो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ जी सर। और साथ में मैं पीएसयू के लिए जॉब तैयारी कर रहा था, तो ये ऑयल इंडिया में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एग्जाम दिया और तैयारी मेरी की हुई थी, तो मैंने निकाल दिया वो इंटरव्यू के लिए। अब मैं अल्टीमेटली उसी में जाना चाहता हूँ, फाइनली अपने एक लॉन्ग टर्म कैरियर में उसी में देखना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। इसको प्रिपेयर कर लो, इसमें वो तुम्हें जरूर पूछेंगे तुमसे ना, वो क्यों ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, राइट। ओके सर। सर मुझे ये एक डाउट रहता है कि जो टेक्निकल पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ूँ सर, क्योंकि डीआरडीओ का भी बहुत सारा है पढ़ने के लिए, और फिर रिफाइनरी का भी देखो, बहुत सारा है पढ़ने के लिए, और क्योंकि आपने फिर। उसमें ओएनजीसी में अप्रेंटिस की है, तो और ऑयल इंडिया में जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो बेसिक सेंसर्स के बारे में पढ़ा ही होगा ना। हाँ सर पढ़ा है, पर हाँ, दोबारा तो दोबारा उसके कौन बारे सा में पूछ ज्यादा सकते हैं आपसे ना, उसी के बारे में पूछ सकते हैं वो। ज्यादातर। हाँ, क्योंकि क्योंकि आपका तीन काम चीजें होती है सर, इंस्ट्रूमेंटेशन में ही गेट है वहां पे। सिलेबस हो गया है, गेट सिलेबस हो गया है, एक रिफाइनरी का एक्सपीरियंस हो गया है, और डीआरडीओ का एक्सपीरियंस हो गया है, तो तीनों बहुत वास्ट हो गए देखो, हैं और 2-3 दिन बचे हैं। डीआरडीओ में क्या किया, उसका उनको तो इतना आइडिया नहीं होगा ना वहां पे काम का, ज्यादा क्या किया तुमने वहां पे, तो नहीं। उसमें तो हल्का फुल्का ही पूछेंगे। हम्म। एम्बेडेड के बारे में पूछ सकते हैं, एम्बेडेड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, हाँ सर। क्योंकि सर क्योंकि एम्बेडेड कई बच्चों से वैसे प्रोफेसर, भी पूछा जा चुका है कि एम्बेडेड क्या होता है, और जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं सिंपल से। ये तो बहुत बेसिक हो गया सर, जो हम हाँ, तो एक्चुअली में करते हैं। वही पूछा जाता है बेटे, वो आंसर नहीं दिया जाता बच्चों से वहां पे। हाँ सर एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन नहीं पड़ी कभी। हाँ, तो डेफिनेशन को उनको अच्छी इंप्रेसिव होनी चाहिए, मतलब ना थोड़ी, जी सर। थोड़ा और सर कुछ हल्की। सर हाँ माइक्रो जी सर। कंट्रोलर के बारे में पूछ सकते हैं फिर साथ में एम्बेडेड में, क्योंकि 805 में भी तो पढ़ते हो ना। सर वो सब आता है। हाँ, तो बस उसका पूछ सकते हैं। क्योंकि हाँ मुझे, मैं कह रहा था कि सर वहाँ पर मे बी गुवाहाटी में इंटरव्यू है, सो वहाँ पर शायद प्रोफेसर हों, आईआईटीज के भी प्रोफेसर हो सकते हैं शायद इंटरव्यू पैनल में, तो वो कोई लोग दिक्कत हो नहीं जाए। है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आंसर को कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ बताओ बस। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो हमारे अंदर कंटेंट जो हम बताना चाहते हैं उसको डिलीवर नहीं कर पाते वहां पे। सर हमारे मतलब प्रॉब्लम पता है क्या होता है, कुछ होता है कॉन्फिडेंस कम होता है, मतलब गलत चीज कॉन्फिडेंस के साथ बता नहीं सकते, और कौन और सही बिल्कुल पता होता नहीं है, तो कॉन्फिडेंस ला नहीं पाते सर, देखो, क्योंकि फिर। अगर सही नहीं पता तो मना कर दो वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गलत बताओगे तभी तो पकड़ लेंगे ना। हाँ तो वहां लेकिन पर हाँ, वो कई कंफ्यूज हो जाता क्वेश्चन है सर। ऐसे होते हैं जिनका कोई यस और नो आंसर नहीं होता, या उसमें डिस्कशन आंसर की होता एक परसेंटेज होती है, जैसे कैलाश सर ने भी आपको बोला ना कि कुछ तो बताओ उसके बारे में, तो एटलीस्ट है। कुछ आइडिया दोगे तो वो अच्छा रहेगा ना। यस सर। सर क्योंकि ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में गलत बोल देंगे तो फिर वो और नेगेटिव ना हो जाए इससे। नहीं, गलत नहीं बोलना, गलत के लिए किसने बोला तुम्हें। नहीं मतलब शायद अप्रोच नहीं समझ पाते ना, कभी कभार आपने एक क्वेश्चन की बस 2 लाइन बोल दी कि इसके बारे में बताओ, तो अब उसके दो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो हम पकड़ नहीं पाते कि कौन सा डोमेन में रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अब कोई भी दूसरा डोमेन उठा के हम कॉन्फिडेंटली बोल दें तो फिर उनको उल्टा ना बैकफायर हो जाए कि एक तो गलत वो ऊपर से बस कॉन्फिडेंस। अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा बस, बाकी तो वहां पे सिचुएशन अब कैसी होगी वो तो एक, मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, उसका कुछ कर नहीं सकते ना, बट अपनी तरफ सर। से मतलब वहां पे एकदम देखो, अगर कुछ नहीं आता, मान लिया कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, तो एकदम से होपलेस नहीं होना वहां पे, बस अपने माइंड का कंट्रोल को लूज नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज होती है। जी सर। वेट करो अगले क्वेश्चन का, वहीं पे परेशान मत हो जाओ कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो पता चला आगे का सारा ब्लैंक कर लिया माइंड, वो प्रॉब्लम भी है, वो है जो दूर करनी है। सर अभी हो रहा है स्ट्रेस बहुत हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा दूर आराम से। अभी मॉक इंटरव्यू का बेनिफिट यही है ना, ठीक है। जी। बाकी अलग से बात कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो।